move. Nifty ka movement precisely is what we are seeing. And यहाँ पर I want someone to be active on YouTube chat. People are asking there. At least please reply and respond to them so that they can join. There is some technical glitch on YouTube. Okay, so what we have to see is options are very powerful instrument if you have to trade options. And just a second. Okay. If you are trading in options, then you have to ensure that you understand the option parameters. क्योंकि क्या है, मार्केट गिर रहा है, पुट्स भी गिर रहा है, क्यों ऐसा होता है? That is known as implied volatility. Before I do that, I'm just going to go on the trading view, share across my screen, and we are going to talk about market. But before I do that, I want to ask every one of you, are the levels working? The morning tweet levels, are you following? And the short videos, is it good? Is it useful? The morning short videos, आप लोग देख रहे, is it helpful for you all? I'm just going to share across the screen very quickly. Okay, is it helpful? Okay, fantastic. And the morning tweet levels देखा आज का क्या ट्वीट था? मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को. It is very useful. Hassan, Mahesh, Sanjay, Anand, Rajkumar, glad to have you also here. Viral, Weber, fantastic. Anita Chaudhary, glad to have you. Deepak, it's always lovely to have all the mentees with me, and it's always fantastic to have you all here. So यहाँ पर बहुत ही quickly अगर हम देखेंगे जो मार्केट का, let me just share my screen across very quickly. Where is the trading view gone? Okay. यहां पर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी ट्रेडिंग व्यू की, गाइस? Levels are helpful, fantastic. How to handle the situation is not clear. अरे भाई, ट्वीट है, ट्वीट के 4 लाइन में मैं आपको सिचुएशन हैंडल कैसे करना है कैसे बताऊं? For that we do that mentorship program, right? In 4 liners I can only either mention a level or I can write down a story. If I write down a story, people will not read about it because they need the levels, and it works well. It works like magic. यहाँ पर अगर आप चार्ट देख पा रहे, on this chart we talked about how the price should go on the upside. And there is a pattern which is known as a neo-wave pattern. That neo-wave pattern is a diametric pattern. That diametric pattern suggests that price are moving in the form of A, B, C, D, E, F, and G. Okay, this pattern is A, B, C, D. We have wave E, F, and then we should have G. So if I have to label it, I'm labeling it here right now. So यहाँ पर everyone is able to see my screen. I've shared the screen. There is some problem. Let me just re-share it across again. Okay, are you able to see the screen now? Are you able to see the chart? Okay, so there seems to be some challenge, but अभी आपको दिख रहा है. Okay, lovely. So यहाँ पर अगर हम चेक करें, what we are seeing is this is a diametric pattern. In a diametric pattern, we completed wave here, A here, B here, C, D is done. This completed wave E on the upside. That is pretty much clear now. So I can mark this as wave E, which completed here. And this was in the form of an expanding triangle pattern. So wave E is complete here. After completion of wave E, we are moving down in the form of wave F, not F. This is a bigger degree E. So let me just mark that across. Okay, यहाँ पर. So यहाँ पर wave E complete किया. This F, which you are seeing right now, जो अभी आ रहा है wave F, mimics wave B. अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था. इन दैट वीडियो आई मेंशन दैट दिस वेव बी हैज टेकन अप्रोक्सीमेटली 8 days. सो अप्रोक्सीमेटली 8 days इसने लिया था. यहां से अगर हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 days लिया था.
and this wave F can also mimic, if mimics wave B, might take around 8 to 9 days. And we can clearly see that this wave B, if you are checking here, is taking the time that we expect it to take. That's the beauty of this wave diametric pattern, because it is doing what we expect it to do very, very simply. And यहाँ पर अगर आप देखेंगे, this movement has been within. So I'll go on 1 hour time frame chart. Before I go on 1 hour time frame chart, what is our forecast? Why the bigger wave? This is purely neo wave I'm talking right now, combined with cycles. So if you look at the bigger wave, wave F mimics wave B, wave G, जो wave G होगा, that will mimic wave A in terms of price time. Price wise, मुझे नहीं लग रहा इतना ज्यादा होगा, but after the completion of wave F, price wise उतना नहीं होके maybe 50 to 61.8% of A, because that was event driven. We might have at least 8 to 9 days of up move. ठीक है, तो 3 से 4 दिन हो सकते हैं हम और करेक्ट करें next 3 to 4 days. So I'm talking about price and time both. Next 3 to 4 days we might correct in wave F. कहां तक जाएंगे? Let's see, maybe we might reverse from here, or we might go to 25,600. Short term में daily bias negative भी है, we might go there. So overall path क्या है? यहां से हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं. कितना जाएंगे वो हम शॉर्ट टर्म चार्ट पे देख सकते हैं. प्रोजेक्शन क्या करना है हमें यहां पर? If I project, this is trend based fib extension. Okay, from here if I project wave A is this much, and I project this wave A from the completion of wave F. F तो अभी assume करें कि यहां कंप्लीट होगा कि कहां होगा. I'm just assuming that अगर मैं 61.8% लेता हूं, I don't want to be too bullish also for you all, but I'm just saying still we touched 27,090 levels on the upside. 27,090 conservatively is what I'm talking about right now. When Nifty was 24,800, 24,728, when I talked about 25,800, people never believed it. So right now, the targets on the upside for post completion of this is at least the lifetime high, which is about 26,477, and eventually 27,090 तक हम जाने चाहिए. That's how the movement should be. This will complete wave F, which is currently going on. An assumption है कि हम at least 61.8% of fib projection तक जा सकते हैं. That's the projection. But is it going to be one-sided rally कि यहां पर जाओ आग बंद करके बाय कर लो और मार्केट को तेज कर लो? नहीं. It's a process. In this process, you have to keep on evaluating. So Elliott wave is like a GPS of the market. You know GPS? GPS मतलब क्या होता है? GPS means that it is if you building a building, right? If you're building a good building, a wonderful building, an architecture, you need a blueprint. The blueprint shows you how the price should, sorry, not price, how the floors should be, how it looks like, how it has to be connected, everything. It is the blueprint. Once you have the blueprint, you start building the blocks as per the blueprint. Similarly, it's like an address and the GPS. If you want to go from Mumbai to Delhi, you need an address. If you have an address, you have a GPS, you can navigate it very well. तो मार्केट भी वैसा ही है और नियो वेव भी वैसे ही है. So Neo wave or Elliott wave gives you the blueprint of the market. This is how it can behave, and it is the GPS. Okay, and the GPS of the market will suggest how it should go, but we should evaluate कि भाई अगर यहाँ का correction और deeper आ गया, so how do we change our view? When do we go wrong? What should be my stop loss? Those things are very crucial. समझना बहुत जरूरी होगा. You will not believe, just a few days back, someone called and said that I paid you where someone committed doubling my money every hour. I said, भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं.
I cannot double your money every hour. I cannot double your money in one day also. Please, these are fake scams that keeps happening around. It is not possible. Okay. So I teach people how to follow the process. It might happen once, but can you repeat the process? Can it be done 100 times? I was teaching my mentorship program on Wednesday. I was just talking about it. Can you repeat that process? That is the key. Now, the process is overall, this is what we are expecting markets to do. We expect markets to move in the form of wave F right now, and then it should come up in the form of wave G. Now, the aim when you're looking at this is to understand the internals of this wave F. Nifty is moving in form of wave F, which can complete near 25,650 to 25,540 levels, and then wave G on upside should resume to lifetime highs and probably near 27,090 levels. ओके, यहां पर अगर आप देखोगे बहुत ही सिंपली है। अभी इसको अगर हमें आगे देखना है, वी लुक एट द एके इंडिकेटर। एके इंडिकेटर अगर आप देख रहे हैं और आपके पास एक्सेस होगा, इट हैज डिविएटेड ऑन द डाउन साइड, विच मीन्स फिलहाल के लिए ट्रेंड बेरिश है। फिलहाल के लिए वी आर इन द मदर ऑफ द बुल मार्केट्स, बट शॉर्ट टर्म करेक्शन में। ठीक है, तो हो सकता है यहां से 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे है। नाउ व्हेन आई गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, this is where the signaling comes. Okay, I'm again repeating. 1 hour time frame chart पे अगर आप जाओगे, this is where the signaling comes. We completed wave E on the top, which we are looking on the daily time frame chart. ठीक है, after this was also the bigger degree wave, ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल में कंप्लीट किया। दिस वाज आल्सो बिगर डिग्री वेव ई। आई एम जस्ट चेकिंग, ये डी था, डी को मैं डुप्लीकेट करता हूं। आई एम गोइंग टू पुट इट अक्रॉस हियर एज 1 second, and this will be my wave E. This is my wave E. Post वो refresh हो रहा है. This is my wave A completion. This is my wave B completion here. And we are right now moving down. This is a classic flat corrective pattern. Classic है. And we are moving down in the form of wave C right now, जो फिलहाल ongoing है. This wave C is right now ongoing, which is retracing a portion of the entire rise. इसका support कहाँ है? So I go to fib retracement and I try to find out where is the support. So we breached 23.6. The support is around 25,530, which is 38.2%. And so we will have to see that. Are we going to stop near that support zone? This is also the trend line, which is extending further. That's the trend line. That is the support zone. So which means this right now is moving down. अगर हम यहां से नीचे जाके अगर पॉजिटिव रिवर्सल बनता है, so my hourly AK indicator is also on the sell side. Along with that, use an indicator which is known as KST. These are very powerful indicators, and use KST on a 15 minutes chart. So 15 minutes chart पे अगर आप KST apply करोगे with the wave count, it is simply amazing. So on a 15-minute chart, let me go on and share across this on 15 minutes. Just give me a second. I'm just checking. Okay, I have another trading view where we have the time cycles marked. So I'm going to do that. This is a regular flat correction, absolutely. And यहाँ पर अगर आप देखोगे regular fresh flat corrective pattern अभी ongoing है. Confirmation कैसे मिलेगा मुझे कि ये complete हो रहा है? We might have to check from the basis of cyclical analysis. So cycle analysis कंबाइन करना है हमें, साथ में हमें इन मेथड्स को कंबाइन करना है. सो I'll switch my screen to another chart now. This one. So what I'm doing is I'm trying to make you a multi-time frame trader. You look at the daily. I'm going to ask few questions. Can you please respond to that questions? What is my daily bias? All the people who have attended my master class, who have been in my Gurukul, ये आंसर तो आपको आना चाहिए. डेली बायस क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं. डेली बायस बेरिश है.
क्यों? क्योंकि हाई इज बिलो प्रायर हाई, लो इज बिलो प्रायर लो एंड क्लोज इज बिलो प्रायर। डन। डेली बायस में गड़बड़ है। आवरली बायस क्या है? आवरली ट्रेंड बेसिस ऑफ द थ्री कैंडलस्टिक रूल इज व्हाट आई एम आस्किंग। आवरली बायस क्या है? आवरली ट्रेंड भी बेरिश। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। कोई कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ओके, आवरली मेरा बेरिश है, डेली मेरा बेरिश है, तो फिर कैसे अभी आगे देखेंगे हम, इसे कैसे देखना है फिर? तो कैन आई से दैट इफ माई आवरली इज बेरिश, इफ माई डेली इज बेरिश, विच मीन शॉर्ट टर्म में गड़बड़ है। शॉर्ट टर्म में गड़बड़ है। वीकली एक बार चेक करते हैं। वीकली एक बार चेक करते हैं, वीकली ट्रेंड क्या है। वाह, वीकली ट्रेंड क्या है? मैं पूछ रहा हूं आप सभी से, जिन्होंने मास्टर क्लास अटेंड की है उनसे पूछ रहा हूं, वीकली ट्रेंड क्या है? ये था हमारा कल का लो 25718, आज का क्लोज है 25722। मतलब वीकली ट्रेंड अभी भी बुलिश है, वीकली चेंज नहीं हुआ। तो मंडे क्रूशियल होगा, बिकॉज वीकली ट्रेंड में थोड़ी सी गड़बड़ है, बट मंडे क्रूशियल होगा। लेट्स गो बैक ऑन अ 15 मिनट चार्ट अगेन। इफ माई डेली इज बेरिश, इफ माई आवरली इज बेरिश, वीकली थोड़ा कंसर्निंग है। मतलब प्राइसेस में प्रेशर तो है। तो फिलहाल के लिए अगर मुझे बाय करना है, आई माइट वांट टू बाय निफ्टी once I get a confirmation of time and price action. How? This is a cycle which is going to be there. I'm going to talk about this cycle in much detail later on. This cycle is suggesting that the price can reverse up about 25,840. Can you see that? Price action. Okay. So if I go to my other screen again, जहां पे हमने वेव काउंट कर रखे रखा था, साइकिल पे हम बाद में बात करेंगे डिटेल। सो इफ आई कम हियर एंड माय AK indicator, what is my AK indicator suggesting? Guys who are having AK indicators, is it buy or sell? And can you see its power? AK इंडिकेटर सेल में है इस पॉइंट से, और सेल में ही है अभी तक। सेल में ये वाला पॉइंट टच नहीं किए, जस्ट यहां के रिवर्स हुआ, which means the sell started on an AK indicator 15 minutes from this level and we are still on the sell side. Wow, so simple. KST कहां है? मोमेंटम नीचे है कि ऊपर है? KST के हिसाब से मोमेंटम कहां बन रहा है? For people who knows KST, how to apply KST indicator, I'm asking all of you. मोमेंटम नीचे की होगा। ओके, RSI में कुछ हो नहीं रहा है, मतलब नथिंग। ओके, नाउ so what I have to do is I have to trade this market now. To trade this market, I tweeted in the morning only one simple thing: sell on the rise or buy on dips for a reversal. Now both worked well. नीचे आया, ऊपर गया, नीचे रिवर्स। सुपर। Since my weekly is up, my daily is down, and my hourly is down, I am going to sell on rally, which means if Nifty comes back to 25,800, reverse is sell for again a move, unless it breaks above this swing, which is an important price action area. Unless it breaks above the swing, which is an important 25,833 price action area. With that swing, if my AK turns up and my KST turns up, I get a strong conviction. Indicator secondary, पहले price action, भाव भगवान है. That's a strong conviction. Now to ride that up move, we need to understand options. I'm asking how many of you are trading in options? Can you put down on the chat, please? And people on YouTube, are you comfortable now? Are you able to see me? Are you able to hear me? Are you able to make some noise? साथ ही में मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक शेयर किया क्या सभी के साथ में? डिड दे जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी? डायरेक्टर साहब, कैन यू प्लीज इंश्योर दैट्स डन एज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि लोग मिस आउट कर जाएंगे यार। मैं चाहता हूं वो जुड़े मेरे साथ में। सो कैन यू प्लीज इंश्योर दैट they join the WhatsApp community? Link will have changed. Can you check if this link is working? Can you please check and then share it across? And also share the QR code with me so that I can then give it across to every one of them.
ओके, व्हाट्सएप लिंक वापस से शेयर करिए सभी के साथ में एंड मुझे क्यूआर कोड दीजिए जिससे आई एम नॉट श्योर इफ द क्यूआर कोड वुड हैव चेंज्ड बिकॉज द प्रॉब्लम विद व्हाट्सएप राइट नाउ दीज डेज इज दे कीप blocking across. I don't know why. Even if we share the research, they block. That's the challenge. That's the challenge. What to do? Nothing we can do. So I'm just checking. I have a QR code. I'm just checking if we are able to make people scan the QR code and I'm going to just share it across. And can we please make down as a note to do this activity so that people don't miss out? कहाँ से scan होता है भाई ये? मार्केट में देखते देखते ध्यान रखते रखते बाकी सारी चीजें दिमाग से निकल ही जाती है. So I'm just checking if the QR code is good and people are able to join this. नहीं चल रहा है QR code. The QR code is not working. Can someone please share across the QR code so that I can share with my audience and they can do that on on the Slack if you can share it across with me. Okay, are you able to join the community? Leave it. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. I was going on the chart here. Just a second. Everyone join the link. Okay, okay. Oh, wow. I was just sharing it across. Just one second. I'm opening up my Go charting. Are you able to hear me now? And we are entering into the world of options. Are you trading options, guys? Okay, lovely. You are trading in options. Super. Uh, there is some problem with Go charting. It's not loading. What's wrong? Cannot find the server. I'm not able to open up. Yes, Santosh, you can do that. I wanted to show you. Do you want to see implied volatility, how it's working and how it's doing? आपको देखना है क्या implied volatility कैसे चल रही है market में? And is it what is the implied volatility suggesting? Let me just show that across. My Go charting should work. It is not working. Can someone check if Go charting site is down or my internet has a problem? Anyone can check Go charting? I'm putting it on the chat here. IV's crashed today. Yes, of course. IV's crashed. I want to show that. I want to show you the implied volatility due to bad weather. Who knows what's going on? That's the technological glitch. So my team is checking if Go charting is on. Can anyone check from my team, please, if the Go charting is working? Because I want to show them and I'm not able to open it. I want to show the options chart and I want to show the implied volatility and how it's working. It is working at your end. What's wrong with my machine? What's wrong with my Mac? Okay, it's loading now. Fantastic. It's loading now. The weather went up again and it's loading. So that's good. Over here, I'm going to on an options desk. Okay, and that's the chart. So if I look at options, options are very powerful instrument. You need to know, when you are trading into options, you need to know about momentum. You need to know about time. You need to know about these things. These things are very, very crucial when you are trading in options. You have to understand implied volatility also. How to understand implied volatility? Suppose if I am checking across a strike price on the call side, which is say 25,000. This is 25,900 put. I want to check on the call side. This is 25,000. No, I will check 25,300 put option. And I'm going on 5-minute chart. And I'm going to put an indicator which is known as implied volatility. When I'm looking at this, can you see this?
ओके, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिखाया था और सिखाया था. कैन यू सी दिस चार्ट? ओके, this bottom chart that you are seeing here is known as an implied volatility. Can you see that the implied volatility was around 14.73 when the option price was around 9 rupees? This is an out of the money put option. Okay, 9 rupees पे था and implied volatility was 14.71. Option prices continue to not move up despite of Nifty going down by 150 points. Can you see that? Nifty नीचे जा रहा है, put option भी crash हो रहा है. ऐसा हुआ आज आपके साथ में? Salil was mentioning and many other people might have mentioned. So rather than 25,300, let me show you an option which is Nifty option, which is of 25,800 put option is what I'm, maybe 25,700 put option लेते. Did you trade it 25,700 anyone? Put option. और आप सोच रहे हो पैसा नहीं बन रहा है. हुआ आपके साथ ऐसा? मार्केट नीचे था, पैसा ही नहीं बन रहा है. Did it happen with you? Okay. I'm also going to compare it with what? One more chart. No, new panel, which is Nifty. And all the mentees and the Trishul participants, we might have a special session from Go Charting in next week. I'm going to send you an invite. Wednesday around 5 p.m. is what we are planning to have a special exclusive session for all our Gurukul participants. So will it be useful for you? So let me know. So we'll have a special exclusive session how to use this platform from Go Charting team directly. And वो हम करेंगे. So यहाँ पर एक जो नीचे निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, आई एम गोइंग टू जस्ट डू सर्टेन थिंग्स हियर. वी आर गोइंग टू लुक एट ऑप्शंस. वेयर इज इट गॉन? We are looking at options, we are looking at Nifty, and we are looking at implied volatility. Okay, these are the three different charts that you see here. And यहां पर अगर आप देखोगे Nifty options and implied, यहां पर I am going to just show you. Okay, this movement of Nifty of option put was 67 rupees. ठीक है, 67 रुपीज था. यहां पर ऑप्शन का आईवी कितना था वो देखते हैं. ऑप्शन का आईवी था इस पॉइंट पे 9.75. ठीक है, निफ्टी कितना था इस पॉइंट पे? निफ्टी वाज अप्रोक्सीमेटली 25,800. फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25,700 पुट ऑप्शन का प्राइस 67 था. ऑप्शन आईवी यहां पर अगर आप देखोगे इंप्लाइड वोलेटिलिटी 9.7 था और निफ्टी वो टाइम पे चल रहा था 25,800 लेवल्स पे. निफ्टी मूव हुआ लो पे 25,720 के पास, जो कि सपोर्ट लेवल है, विच आई हैव बीन मेंशनिंग अक्रॉस. पुट ऑप्शन ने फिर भी फ्रॉम दैट 65 रुपीज केम डाउन टू 50 रुपीज, which means even if you are right on the direction of Nifty, you still lost money. Do you agree with me? Nifty moved down by nearly 90 points, but put options also came down sharply as implied volatility cooled off. Even if you were right on Nifty, you did not make money in markets, inputs. Did it happen with you? So यहां पर देखना क्या है, हमें समझना क्या है. यहां पर बहुत ही सिंपली वे से आपको चेक करना पड़ेगा
कि भाई जब आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो, जब आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो, what is the implied volatility at that point of time, and is the implied volatility falling or rising? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अब जब पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो, आपको क्या चेक करना है कि भाई ये ट्रेंड क्या है। ये 5 मिनट का चार्ट है, आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेंड को देखना है। ओके, सोमा कह रहे आई बॉट 25,800 पुट, डिड नॉट मेक मनी। सलील कह रहे आई डिड नॉट ट्रेड, आई वाज एबल टू स्पॉट इट, इट्स ओके, बट कैन आई से द ट्रेंड ऑफ द ऑफ आईवी वाज डाउन? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने खाली ऑप्शन प्राइस को देखा, पैसा नहीं बनेगा। आपने खाली स्पॉट प्राइस को देखा, पैसा नहीं बनेगा। अगर आपने इंप्लाइड वोलेटिलिटी का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को अपने रिसर्च से निकाल दिया, that's why it does not work. Do you know what option strategy I suggested since 3 days? Let's see कितने लोग ध्यान से पढ़ते हैं मेरा ट्वीट, अभी पता चलेगा मुझे। मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी 3 दिन से? शॉर्ट स्ट्रेंगल, फैंटास्टिक। शॉर्ट स्ट्रेंगल, अगर मैं बुलिश हूं तो बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे अगर लेवल ब्रेक होता है स्कैल्पिंग के लिए, और नहीं तो वी विल बी इन अ रेंज। एंड रेंज के अंदर अगर हम जाते हैं, कैन आई से वी एक्सपेक्टेड वेव एफ टू फॉर्म? फैंटास्टिक विजय, शुभम, राजेश, नलिनी, we expected wave F to form, and we expected wave F to be range bound. If it's a range bound market अगर रेंज में रहेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, इफ निफ्टी इज इन रेंज, वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग? रेंज में मार्केट, कोई भी निफ्टी स्टॉक्स कुछ भी हो, रेंज में वोलेटिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? वोलेटिलिटी कम होगी। और कैन यू सी दैट हैपनिंग? एंड देन यू कंप्लेन कि नहीं पैसा बन रहा है, क्योंकि आपने पुट खरीदा, पुट के साथ बेयर पुट स्प्रेड बना रहा था। दैट्स हाउ ऑप्शंस वर्क, स्प्रेड बना रहा था बेसिस ऑफ। सो व्हाट ऑल थिंग्स वी कंबाइंड हियर? वी कंबाइंड wave theory, we looked at how the wave theory worked, we combined it along with an options data just to see how it's happening, we looked at AK indicator, we looked at KST। अब देख रहे हो हर एक इंडिकेटर का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सो इफ आई नो रेंज में मार्केट रहेगा तो पैसा बनाना मुश्किल है कि आसान है? इफ आई नो मार्केट इज गोइंग टू बी इन रेंज, इज इट इजी और हार्ड टू मेक मनी? प्लीज पार्टिसिपेट एवरी वन ऑफ यू। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। रेंज में पैसा बनाना मुश्किल होता है डायरेक्शनल प्लेयर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स के लिए इजी होता है। सो कैन आई स्विच माई स्ट्रेटेजी फ्रॉम एन ऑप्शन बायर टू एन ऑप्शन सेलर? Now that I know when the wave C will complete, the bigger trend will emerge. Once I know that the bigger trend is going to emerge up, can we then expect a good move to start? Guys, are you with me? Then at a low IV, IV खत्म हो चुका है, IV लो है यार, अभी ऑप्शन नहीं बेचना है। अभी तो यार 7.35 पे पुट ऑप्शन का आईवी ट्रेड हो रहा है यार। इतना लो लेवल कभी देखा था क्या? इतने लो लेवल पे अगर पुट ऑप्शन का आईवी ट्रेड हो रहा है, मतलब कितना लो है, तो यहां ऑप्शन थोड़ी बेचेंगे अभी। And so we want to buy IV. We want to buy IV means we want to buy an option without a spread, because the IVs have crashed, range bound हो चुका है. Now I need a confirmation from a KST and AK indicator and a classic opportunity for buyers again. If you keep switching this way, you will see you plug the hole where you were losing money. Once you plug the hole where you lost money, you will make money. That is how it works by default. You need to ensure when you're losing less. And once you do that, you're plugged in. Once you're plugged in, it works for you. So this is the science. ये तो मैंने आपको खाली एप्लीकेशन बताया, बट इज इट इंटरेस्टिंग व्हाट वी डिस्कस टुडे, व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई शोड यू? इज इट गुड, इज इट इंटरेस्टिंग? समझ में आ रहा है क्या कुछ कि सब रॉकेट साइंस लग रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल। दैट्स व्हाट आई लव डूइंग, मेकिंग दिस थिंग सिंपल। ये मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी आ गया, मैं वापस से क्यूआर कोड शेयर कर देता हूँ।
यहाँ पर ये क्यूआर कोड से स्कैन करके आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते। बहुत सारे जन वो लिंक पे शायद शेयर करके ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। आई कीप शेयरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू एंश्योर यू शेयर इट, you like it across. Okay, how many of you are there for my Trishul participant? Chaitanya Goenka, I know you are always there. I look forward to hear what my guru has to say. It's my honor. आप लोग ज्वाइन कर दिए ये? Okay. Oh, and people on YouTube, do not forget to join this. I'm just going to go back on my wave theory. So everything boils down to my wave theory. And going back to that chart, QR code मैंने share किया था. Just सबको दिख रहा है ना QR code? I'm going back to my wave theory. Lunar cycle worked like magic. क्या चला है था? आनंद जी आपने देखा होगा lunar cycle क्या चला है? It is simply wonderful. The lunar worked like magic. It is unbelievable. मुझे खुद को भी विश्वास नहीं होता at times how it works. You make charts and trends look like ABCD. That's my pleasure. मनुष कुमार आप हो त्रिशूल में? ओके, आपने त्रिशूल की बात की तो मुझे याद आया गाइस, कौन कौन है त्रिशूल में? एक यहाँ पर डालिए ना। त्रिशूल मेंबरशिप इज हैविंग, वी आर हैविंग एन ऑप्शंस मंत्र प्रोग्राम व्हिच इज स्टार्टिंग राइट नेक्स्ट वीकेंड, 8th 9th नवंबर। नेक्स्ट वीकेंड ही है ना भाई? डेट का पता ही नहीं रहता है, मैं मार्केट देखता हूं तो वो दिमाग से निकल ही जाता है। 8th 9th नवंबर सैटरडे संडे 2 दिन ऑप्शंस मंत्र का प्रोग्राम है। प्री सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्लीज मेंटीज और सारे त्रिशूल पार्टिसिपेंट्स को दे दीजिए अगर नहीं एक्सेस मिला है तो। एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर साहब लिंक शेयर करिए सभी के साथ में हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टिल त्रिशूल प्रोग्राम विच कंटेन्स ऑप्शंस, एलियट वेव, नियो वेव। सो त्रिशूल का 3 होता है, ऑप्शंस मंत्र, एलियट वेव and new wave. That's the 3 part. Can you please share the link quickly for everyone to check that across? And यहाँ पर 8th 9th नवंबर है डेट, आप दोनों डेट डालिए। इट्स गोइंग टू बी ऑन 8th 9th both the days November, and यहाँ पर आप जाके you can be a part of Trishul program. It's going to be lovely. I'm just going to share across for many of you who wants to know more about it. Let me just open up the screen. So what is this Trishul program and what you are going to learn and see in this thing? Okay, this is going to be consisting of live webinar which is going to be on options. जैसे मैंने आपको options के बारे में बताया, it's going to contain much detailed part of options, plus it's going to have recordings with you for 3 months. Then you'll get access to Elliott wave videos. Then we are going to have live sessions on wave theory. Options मंत्र में हम क्या क्या देखेंगे? Options मंत्र में we are going to look at Keltner channel, breakout method, KST momentum, super trend. अगर आप passive source of income generate करना चाहते हैं from trading in the markets, how to look at super trend, plus combining that with ऑप्शंस पे डायरेक्टली कैसे आप ये सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे। एंड एक्सपायरी डे पे व्हाट शुड बी दिस सेटअप। सो दीज आर ऑप्शंस, इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर आल्सो ओनली फॉर द ऑप्शंस एंड यू कैन डू दैट। त्रिशूल के अंदर आता है एलियट वेव एंड देन सूत्र ऑफ वेव व्हिच इज अगेन गोइंग टू हैपन 6-7 दिसंबर। सो कंप्लीट त्रिशूल प्रोग्राम इज अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और बाकी जो ब्रह्मास्त्र में दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, so you don't have to register separately from Brahmastra, and you can block your seat by paying 10K token for Trishul. Please link share कर दीजिए सभी के साथ for 10K, and YouTube पे भी share करिए with the contact number, so in case they have any doubts. I'm also going to take a very quick poll, and if you have any queries my team can help you out. Which path to financial freedom? यहाँ पर मैंने poll लिया है, ensure you participate in the poll and just be there on the poll. You can participate and I'm open for questions, guys. Sir, I've registered for Trishul program. Glad to know that, Sohan. Can I become a pro in options trading? देखिए ऐसा है, I'm going to teach you. I'm going to again make a very quick disclosure, guys. Whatever we are doing here is purely from learning perspective, educational perspective, or I'm not asking you to buy or sell anything. We are SEBI registered research analyst. Keep that in mind. And investment in market is risky, so ensure you maintain stop loss. There is no guarantee. As I mentioned earlier, you have to understand the process, and I'm going to give you the process, but you have to be disciplined enough to follow that process. And when you lose, ensure you maintain stop loss and lose less. When you make, ensure you're making more. That's how you have to do it. And it works for me. If it works for me, it will work for you. What's the difference between Trishul and Brahmastra? So Santosh, Brahmastra program जो है हमारा, it's a mentorship program where we meet Wednesdays
to discuss about markets, practical application of what we do. Plus in Brahmastra, you also get access to time cycle, which is Kal Chakra. आप यहाँ देख सकते हो. Plus we'll be creating some stock selection algos for momentum multibagger stocks. We'll learn about risk management, money management कैसे करना है, मतलब कितना portion आपको डालना है. All of those things. So if you are a part of Brahmastra, then you are associated with me for lifetime. That is Brahmastra. So if you want to be with me for lifetime, you can be with uh, Brahmastra. We call it Astrogastra, right? Options mantra is Om. Sutra of waves is so. So मतलब बीज बोना बोलते हैं ना, जैसे हम बीज बोते हैं. It's Sutra of waves. Trishul is आपको पता ही है वैसा है. Chaitanya Goenka is a Brahmi and he's writing it here. Sir, I'm down with flu, but I'm looking at my guru always being there and showing up. I got up in the morning, caught Nifty at 24,860 after confirmation, sold at 24,950, made 25% profit and shut my system. क्या बात है, आप फ्लू में भी ट्रेड कर पा रहे हो. जो सिस्टम्स में अप्लाई कर रहे हैं, जो सीखा है आपने ब्रह्मास्त्र में, आई एम ग्लैड टू नो दैट. Can I predict the same way you do after the course? Pooja, that's the aim. I'm going to make you do that. Absolutely. That's my aim. But you have to trust and you have to follow the homework, which I'm going to give you. If you follow the homework, yes, you can do that. Bilkul. Fourth wave में A, B and C on the way and 5 wave start. ये मैंने अभी जो बताया वो नियो वेव था. मैंने एलियट वेव की बात फिलहाल नहीं की है. ओके, देयर इज अनदर. बिल्कुल पूजा आप कर सकते हो. अच्छा, एक और चीज गाइस, आर यू देयर अवेलेबल टुमारो 11 AM मास्टर क्लास रखे गए. आप हो सुबह गोविंद, चैतन्य, यश, एवरी वन ऑफ यू. लिंक शेयर करेंगे क्या बहुत ही क्विकली सभी के साथ में? मास्टर क्लास 11 o'clock सैटरडे 1st of November, नए मंथ की नई शुरुआत करेंगे. एंड सिंपल वे से लूनार साइकिल को देखेंगे, एलियट वेव को देखेंगे. ओके, सॉलिड ब्रेकआउट विथ थर्ड वेव कैसे ट्रेड करना है हमें. लिंक शेयर किए. कैन यू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. यूट्यूब पे भी मैं ये शेयर कर देता हूं लिंक. यू कैन ज्वाइन ऑन द यूट्यूब पे. जूम पे ज्वाइन करना, मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूं, मतलब आप लोग जूम पे आके यहां पर देख सकते हैं. सो लेट मी जस्ट गो बैक क्विकली एंड ओके, आप यहां पर जुड़ सकते हैं बहुत ही क्विकली. 1 second. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक. फैंटास्टिक. सो आप जुड़ सकते हैं. यहां रजिस्टर करना. How do you total for the Trishul program? The Trishul program, see, if you look at the individual, let me go back on my screen. Where is my screen gone? Where is it? Here. Okay, I was sharing on my. So if you look at the Trishul program, the individual pricing for people, this is for people who are attending my master class and webinars. उनके लिए pricing मैंने रखा है. Early bird pricing has ended. If you look at options mantra, without early bird, the pricing for options mantra अगर आप देखोगे is 49,000 plus GST. Plus Sutra of Waves is 49,000 plus GST. Plus there are access to 10 bonus videos, which is worth 30K, which I am going to give it across. Plus the access to this indicator along with research report, which I am going to give you in 251 only. वो अलग से आपको पे करना होगा because that is advisory. Advisory is different than training. Please keep that in mind. And that's why that is itself worth 30K. तो अगर आप वो सब सारी चीजों का मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वीडियो जो आप यहाँ पर देख रहे हो, that itself is going to be worth 25K. So then I'm giving you 3 months of recording of this entire in Trishul membership. आपको 3 महीने की recordings मिल रही है. Membership है इसीलिए. That itself is worth again 20K. So when you do that, you end up total is around 2,17,000. But because you are here with me, learning this along with me and giving your time, that's why the offer price. Otherwise, this offer price is not going to be there. Making sense? Okay. So Aruna has registered for Trishul program. Fantastic. Glad to know that. It's lovely. And fantastic guys. Okay, तो चलिए अभी मिलेंगे कल के दिन में. आप लोग जो जो जुड़ चुके हैं, मुझे कंफर्मेशन, अगर आप ऑप्शंस मंत्रा खाली करना चाहते तो यू कैन रजिस्टर फॉर ऑप्शंस मंत्रा ऑल्सो. पोल फिलहाल ऑन गोइंग है यहाँ पे. एंड मैं लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ सभी के साथ. लिंक वापस से शेयर करिए एक और बार so that everyone can join. Let me just share it across again with all of you. Just a second.
एंड यू कैन पे द 10K टोकन ऑल्सो, त्रिशूल टोकन ऑफ 10K भी आप पे करके you can block your seat, and the balance you can pay in EMI. So there are EMI options. You can also pay in EMI for Trishul. It's starting next week, दोस्तों. और लर्निंग आज से ही शुरू होगी, क्योंकि प्री सेशन वीडियो ऑप्शंस मंत्रा का दिया जाएगा आपको, वो आपको गो थ्रू करना है. 10 बोनस वीडियोस दिए जाएंगे, वो आपको गो थ्रू करना है. प्लस मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वीडियो दिया जाएगा 12 घंटे का, वो गो थ्रू करना है, सो दैट योर फाउंडेशन इज क्लियर. देन वी स्टार्ट विद ऑप्शंस. वी स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस मंत्रा. मतलब बेसिक्स आप देख के आएंगे. वी स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी. वी लुक एट ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, वी लुक एट वॉल्यूम प्रोफाइल, वी लुक एट सिंपल वे ऑफ केएसटी ट्रेडिंग, केल्टनर चैनल, ये चीजों को कैसे ब्रेकआउट की तरह यूज करना है वो करेंगे. इसकी फिर रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएगी. उसके बाद में हमारा आपको कमिंग वेडनेसडे 5 o'clock देयर इज गोइंग टू बी गो चार्टिंग स्पेशल सेशन विच वी माइट कंडक्ट. I'm just confirming with my mentees first. If they are available, we will do that. And Trishul participants can also join in. And you will be attending that so that आपको प्लॉटिंग के बारे में कोई दिक्कत ना आए. उसमें स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो सारी चीजें देखेंगे हम. एंड देन वी स्टार्ट विथ wave theory. So it's a journey with me almost for 3 months when you're a part of Trishul program. And Brahmastra, you are with me until for 4-5 months. That's how it is. तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों. आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर. लव टॉकिंग टू यू ऑल. एंड जो कौन कौन कल जुड़ रहा है मुझे थम्स अप दीजिए ना प्लीज. गिव मी अ थम्स अप. हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग विथ मी टुमारो? जस्ट कंफर्म करिए एट 11 AM सैटरडे इन द मास्टर क्लास. फैंटास्टिक. वीरेन, शुभम, सफवन और जो त्रिशूल में जुड़ चुके हैं वो भी यहाँ पर चैट पे डालते जाइए सो दैट आई नो. योगेश, रुचित, सौरभ, श्रीधर, आप भी हो यहाँ पे, अमन, लवली गाइस, देवेश, फरजाद, सुप्रिया, महेश, आप सब जा रहे हैं ना? ओके. जूम पे आना, क्योंकि जूम पे बहुत मजा आता है. चैट क्लियरली दिखता है और चार्ट भी क्लियर दिखेगा आपको. राजीव, और त्रिशूल में कौन कौन जुड़ चुके हैं वो भी कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे, जो जो लोग त्रिशूल में आ चुके हैं. Lovely guys, it was amazing. Love talking to you all. Thank you very much. Have a wonderful time and ensure that आप systematic way से trade करो. Whatever we did is purely learning perspective. And if you learn something, आप कमेंट में नीचे डालना YouTube पे क्या सीखा आपने आज के दिन इस फ्री वेबिनार से. Thank you.